West Bengal set 2023 education subject. In this session, we are going to discuss question number 76 to 100. So, the first question of this session, meta capability of the learner is to regulate and self-direct their own learning in many ways based on their needs and the situation. Identify the conceptual model from the following. Option: Flander interaction model, Malcolm's Knoll's model, dynamic model of learner autonomy, none of the above. कि ये मेटा कैपेबिलिटी जो है एक लर्नर का, उसका जो खुद का लर्निंग है उसी को ये रेगुलेट करता है इन मैनी विच बेस्ड ऑन देयर नीड एंड सिचुएशन। कि एक लर्नर का जो नीड होता है, सिचुएशन होता है, उसी के हिसाब से उसी को दिखकर मेटा कैपेबिलिटी क्या करता है कि उसका जो लर्निंग है उसी को वो रेगुलेट करता है। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है इनमें से कौन सा मॉडल का एक पार्ट है? So the answer of this question is option C, that is dynamic model of learner autonomy। कि देखिए ये डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी जो है ये एक मॉडल है जहाँ की लर्नर के पास फुल फ्रीडम रहता है, ऑटोनॉमी रहता है कि वो कब कैसे क्या वो लर्न करेगा। ओके, और ये कब कैसे क्या जो लर्न करेगा इसी को कौन रेगुलेट करता है? इसी को रेगुलेट करता है लर्नर का जो मेटा कैपेबिलिटी है वो। ओके, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि लर्नर का जो मेटा कैपेबिलिटीज है वो क्या करता है कि एक लर्नर का जो लर्निंग है हो गया उसी को रेगुलेट करता है, उसका जो सिचुएशन है और उसका जो नीड है उसी के हिसाब से। So the next question of this session, in the Howard Gardner's theory of intelligence, the ability to manipulate both the body and object is referred to। कि जो ये गार्डनर का जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, ओके, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, यहाँ एक आदमी क्या कर पा रहा है कि उसका जो बॉडी है और ऑब्जेक्ट जो है उसको मूव कर पा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ लर्निंग के अंदर आएगा? ऑप्शन: लॉजिकल मैथमेटिकल लर्निंग, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, bodily kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, visual spatial intelligence। So the answer of this question is option B, that is bodily kinesthetic intelligence। Next, see, this is a theory of multiple intelligence which is given by गार्नर, जिसको कि गार्नर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। और ये 1983 में उनका एक बुक था फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसी में इसी को वो क्या किए थे कि इंट्रोड्यूस किए थे। हो गया, और ये फर्स्ट 6 to 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, लेकिन बाद में उसी को इंक्रीज करते हुए गए हैं। हो गया, तो दिखते हैं कौन कौन सा इनका हिसाब से इंटेलिजेंस है। एक तो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो कि सबसे लास्ट अभी जो लाटेस्ट है उसी को नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बोला जा रहा है। और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जो लिविंग बीइंग है, हो गया, जो नेचर है उसी को समझना ही क्या बोला जाता है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बोला जाता है। नेक्स्ट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जहाँ की हमारा जो पिच, टर्न, राहिम हो गया, ये सब जहाँ हम लोग डील करते हैं उसी को म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, लॉजिकल मैथमेटिकल, जहाँ की हम लोग नंबर को डील करते हैं, क्वांटिटी को डील करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये भी लेटेस्ट डेवलप किया हुआ एक इंटेलिजेंस है। और उसके बाद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गया, और ऐसे स्पैटियल इंटेलिजेंस। ऐसे वो 9 तरह का क्या इंटेलिजेंस को अभी दिए हैं गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिजाइन इन व्हिच 2 or more independent variable at least one of which is manipulated are simultaneously studied to determine their independent and interactive effect on the dependent variable reflect what kind of research design। देखिए कि एक रिसर्च डिजाइन जहाँ की 2 इंडिपेंडेंट या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्या किया जा रहा है, उसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनमें से एक को एटलीस्ट मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसी को साइमल्टेनियसली स्टडी किया जा रहा है। हो गया, साइमल्टेनियसली स्टडी किया जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कोई एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या है या जो इंटरेक्टिव इफेक्ट क्या है उसी को दिखा जा रहा है। तो यहाँ कौन सा मेथोडोलॉजी आप एडॉप्ट कर सकते हैं? ऑप्शन: प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन,
factorial design, repeated measure design, experimental design, group design. So the answer of this question is option B, that is factorial group design. और factorial design जो है यहाँ हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा है, वहाँ हम लोग इंटरवेंशन दे रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो सकता है कि यहाँ फैक्टोरियल डिजाइन हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सी मैच द कॉलम कि एक साइड में 4 पॉइंट ऑफ क्वालिटी, फादर ऑफ क्वालिटी, कोर कॉम्पिटेंसीज, टोटल क्वालिटी। दूसरा वाला साइड में क्या है, सी के प्रहलाद मैनेज सी हियर देयर इज सम मिस्टेक ऑफ टाइपिंग। 14 point of quality management, father of quality control, core competency of model, total quality management in education। हो गया। सेकेंड लिस्ट में है सी के प्रहलाद, W.E. डेमिंग, E. M. मुखोपाध्याय एंड W. Seward। So the answer of this question is option D, that is 14 point of quality management is equal to, it is developed by Deming, W.E. Deming, father of quality controls W. Seward, core competencies model C. K. Prahalad, total quality management in education M. Mukhopadhyay। Okay, this is the actual combination of this। Next, which of the following statements are true with respect to the features of new social movement? कि इनमें दिया गया स्टेटमेंट से कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है एक न्यू सोशल मूवमेंट का जो फीचर्स है, अगर उसी को हम देखेंगे, दे आर द रिजल्ट ऑफ सस्टेन कलेक्टिव एक्शन, द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर ए लीडर हु विल स्ट्रक्चर द प्रोटेस्ट एंड ब्रिंग द मेंबर टुगेदर, द पार्टिसिपेंट इन द मूवमेंट हैव शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड आइडियोलॉजीज। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 3। It means all the statement are related to new social movement। ये न्यू सोशल मूवमेंट जो है इसी का जो फीचर क्या है, दे आर द रिजल्ट ऑफ सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन। हो गया। दूसरा वाला क्या है, द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर ए लीडर हु विल स्ट्रक्चर द प्रोटेस्ट एंड ब्रिंग द मेंबर टुगेदर, द पार्टिसिपेंट इन द मूवमेंट हैव शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड आइडियोलॉजीज। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन इंक्लूसिव स्कूल डैश डिफरेंशिएट between student and set less challenging achievement target for especially able children or specially able children, is committed to learning outcomes of all students irrespective of their capacity, is committed particularly to improve the learning outcomes of specially able children, is an endeavor to equip student schools for children with disabilities with vocational training facilities। So the answer of this question is option B, that is an inclusive education is committed to learning outcomes of all students irrespective of their capacity। Next, which of the following option are the stages of the policy making process in chronological order? Option: policy evaluation, issue identification, agenda setting, policy adoption, policy formulation, policy implementation। Next, issue identification and agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, policy evaluation। Policy implementation, policy evaluation, issue identification and agenda setting, policy formulation, policy adoption। Next, policy formulation, issue identification and agenda setting, policy evaluation, policy implementation, policy adaptation। So the answer of this question is option B, that is issue identification and agenda setting, policy formulation, policy adaptation, policy implementation and policy evaluation। This is the actual stages of the policy making process in chronological order। Next, delivery method, duration, content element, exercise and activities, assessment and media are related to which part of the EDI framework of instructional design? Option: analysis, design, development, implementation। ये देखिए, ये डिलीवरी मेथड, ड्यूरेशन, कंटेंट एलिमेंट, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज, असेसमेंट एंड मीडिया, ये सब एडिच मॉडल का
जो एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है उसी का कौन सा पार्ट के साथ एसोसिएट है, वो है ऑप्शन बी, दैट इज डिजाइन के साथ क्या है कि एसोसिएट हो। कि देखिए ये है एडिच मॉडल, अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमको उसका फुल फॉर्म देखने के लिए मिलेगा एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। एनालाइज को अगर हम देखिए तो यहाँ जो प्रॉब्लम है उसी को आइडेंटिफाई करते हैं, हो गया। उसके साथ साथ जो आइडेंटिफाई टफ लेवल ऑफ लर्निंग गोल, हो गया। उसके लिए जो टफ लेवल ऑफ लर्निंग गोल है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेक होल्डर का जो नीड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हो गया। जो नीड एनालिसिस है उसी को ट्रेन करते हैं। जो ऑडियंस और टारगेट ऑडियंस जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। और जो रिसोर्स है उसी का एक तरह से मैपिंग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो डिजाइन, और डिजाइन में अगर हम देखिए तो यहाँ हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिजाइन करते हैं। जो स्टेक होल्डर है उनके साथ वो डिजाइन को क्या करते हैं, अलाइन करवाते हैं और मैप करते हैं, मैपिंग करते हैं जो इवैल्यूएशन मेथड को, हो गया। और उसके साथ साथ एक लर्निंग इंटरवेंशन आउटलाइन को क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं, हाई लेवल्स मैपिंग जो है लर्निंग इंटरवेंशन में उसी को डेवलप करते हैं, मैपिंग करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो डिटरमाइन द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, मीडिया एंड मेथड, कि यहाँ जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया है, मेथड है, उसी को डिटरमाइन करते हैं। डेवलप और इवेलुएट करते हैं जो असेसमेंट और उसका जो टूल है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, उसी को कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं, ओके। और ऐसे हर एक स्टेज में बहुत सारे सब स्टेज और सब फीचर एलिमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन स्टॉपलबीम्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, हो गया। जो स्टॉपलबीम का जो करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल है इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन कंटेंट इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, content input and process. So the answer of this question is option D, that is content input and process. ये जो है ये क्या है कि ये एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम लोग CIPP को देखें तो इसी को स्टॉपलबीम दिए थे। यहाँ जो 4 तरह का इवैल्यूएशन स्कोर वैल्यू देखने के लिए मिलता है, कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन, इनपुट इवैल्यूएशन, प्रोसेस इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन में हम लोग जो बेनिफिशियरीज है, नीड्स है, रिसोर्स, प्रॉब्लम, बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट, हो गया। इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि हम स्टडी करते हैं, हो गया। और हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट को पता लगाते हैं, कॉन्टेक्स्ट को इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट अगर इनपुट इवैल्यूएशन को देखिए तो यहाँ जो प्लान बनाते हैं, स्टेक होल्डर, स्ट्रैटेजी, बजट, कवरेज, रिसर्च, ये सबको लेकर हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। प्रोसेस का बात करें तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। जो डेवलप किया हुआ स्ट्रैटेजी है, प्लान है, उसी को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। डेवलप, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर एंड फीडबैक किया जाता है प्रोसेस में। और लास्ट में जो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में जो है यहाँ इम्पैक्ट, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, एडजस्टमेंट, ये सब चीज वो जो डेवलप किया हुआ डिजाइन है, प्लान है, उसी को हम लोग उसी का जजमेंट करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। NCERT 1995, NCT 1964, UGC 1953, SCERT 1981. So answer of this question is option C, that is UGC 1953. The 6 fundamental principles of andragogy based on Malcolm's Knox model are listed below. Find out which one is incorrect from the following option: need-based learning, experience, self-concept, preparedness, self-esteem, intrinsic motivation. Okay, so the answer of this question is A, that is option A, that is 5. Okay, it means self-esteem is not a part of Malcolm's andragogy principle. See here, the assumptions of adult learning are जो principle है। पहला तो है रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन टू लर्निंग, मोटिवेशन टू लर्निंग, रीजन टू लर्न, सेल्फ कंसेप्ट, एक्सपीरियंस, हो गया। टीचर 6 प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट पेडागोगी, हो गया। रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन टू लर्निंग, रीजन टू लर्निंग, सेल्फ कंसेप्ट एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो है मैच द कॉलम, सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। सेकंड जो है आर्टिकुलेट लिंग्विस्टिक इमेज, empathy, effective classroom management, crystals intelligence. So the answer of this question is option B, that is
social intelligence is related to effective classrooms management. Multiple intelligence is related to articulate linguistic image, or emotional intelligence is related to empathy. Okay, so the next question is, which of the following formula may be used for statistical significance of ANOVA? ओके, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ANOVA के लिए कौन सा जो फॉर्मूला है उसी को यूज किया जाता है? एफ को अगर हम एफ से को देखिए, एमएस ट्रीटमेंट, एमएस एरर, एमएस ट्रीटमेंट माइनस एमएस एरर, एमएस ट्रीटमेंट माइनस एमएस ट्रीटमेंट माइनस into MSTR square by MS. So the answer of this question is option A, that is MS treatment by MS error. Next, assertion: cost benefit analysis model was first used by Lewin. The introducer considered the first level of unfreezing change under which the need for change is accepted. So the answer of this question is option D, that is A is false but R is true. कि ये जो cost benefit analysis है उसी को ल्यूविन फर्स्ट यूज नहीं किए थे, लेकिन अगर हम लिखे रीजन को, द इंट्रोड्यूसर्स कंसिडर्ड द फर्स्ट लेवल ऑफ अनफ्रीजिंग चेंज अंडर व्हिच द नीड चेंज इज एक्सेप्टेबल, ये एब्सोल्युटली राइट है। नेक्स्ट, मार्क्सिस्ट बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल सिटीजन रीजन, education should create full employment in the context of above statement, which of the following is correct? Option are here. So the answer of this question is option D, that is both A and R is true. Okay, next अगर हम देखिए, identify from the following which is not a part of convention of a convention as announced by United Nations Convention on Right of Person with Disability, UNCRPD. Okay, तो option education, health, support service, employment. So the answer of this question is option C, that is support services. डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1990, 1986, 1999, 1994. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 1994. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल एंड फेसबुक आर सम एग्जांपल ऑफ व्हिच एमर्जिंग ट्रेंड इन ई लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन open education resources, discussion forum, social networking site, assistive technology. So answer of this question is option C, that is social networking site. See, match the column: Taylor's objective model, Scriven goal free model, stack responsive model, clip track model. List 2, evaluate evaluation of full centered subjective factor partner in the educational program, redefine and restructuring the objective, evaluating without referencing goal, different level of evaluation system as incorporated. So the answer of this question is option B, that is Taylor models is related to redefining and restructuring of object. Scriven's goal free model is related to evaluating without referencing goal. Stack's responsive model is related to evaluation is fully centered subject factor partner in the educational program. नेक्स्ट अगर हम देखिए क्लिप ट्रैक को, तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम आर इनकॉर्पोरेटेड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज आउटपुट इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल. व्हिच मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन इज हैविंग द ओपिनियन स्टेटेड अबव? ओके, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, बिहेवियरिस्टिक मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज बिहेवियरिस्टिक मॉडल. Option is C, that is behavioristic model. Ability to solve problem, cultivate critical and creative reasoning are the focus of which of the following? Memory level, reflective level, understanding level, none of the above. So the answer of this question is option B, that is reflective level. See, this is the Herbartian step model. Reflective model memory levels is the latest root model. लास्ट यहाँ लिस्ट थर्डफुल रहता है, मतलब सोचने का स्कोप है वो बहुत कम रहता है. अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ थर्डफुल रहता है, यहाँ सोचना पड़ता है. रिफ्लेक्टिव लेवल यहाँ जा करके कि बिना सोचे कुछ किया ही नहीं जा सकता ये स्टेज में. अरेंज द लोअर ऑर्डर लेवल of intelligence to higher level order of intelligence as per hierarchical model of step model of learning by Gagne. Problem solving, concept learning, multiple discrimination, signal learning, signal SR chain, verbalization, multiple discrimination, concept rule. See, यहाँ इसी के हिसाब से ये ऑप्शन B and C जो है concept learning और multiple learning फर्स्ट आता है क्या कि सिग्नल मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, concept learning, problem solving.
और उसी का उल्टा भी हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, हो गया। See, this is the hierarchy of learning: signal, section, psychomotor, verbal association, multiple discrimination, concept learning, role learning, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें अगर हम देखिए दो तरह का जो है वो देखने के लिए मिलता है, मोर ऑफ द बिहेवियरल एस्पेक्ट, और टफ फोर जो है उसको बोला जाता है मोर टू कॉग्निटिव एस्पेक्ट। नेक्स्ट, a regression equation is given below. From the equations, interpret how much independent variable predict the dependent variable. Y is equal to 32.65 plus 0.24 x1 plus 0.65 x2। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज x1 इक्वल टू 24% एंड y2 इज इक्वल टू 56%। इंटरप्रेट द डिपेंडेंट वेरिएबल। What is the correct sequence of step of Lewin model of change? Unfreezing, moving, refreezing, moving, freezing, unfreezing, freezing, unfreezing, moving, freezing, moving, unfreezing. So the answer of this question is option A, that is unfreezing, moving, and freezing. See, this is the good Lewin's unfreezing change and refreezing के बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर जनरली एक्सेप्टेबल टू मॉडर्न एजुकेशनिस्ट? इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है वो ज्यादा करके जो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट है उनके लिए एक्सेप्ट किया गया है? कंट्रीब्यूशंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी should be only aim of education. Education is bound to have several aims since its concern and several such as individual, the society, family, and the nation of other. There should be one aim of education is one aim of education unchangeable over time and space. There is one objective of education, that is the development of inner natural art of the child. So the answer of this question is option B.